Hello everyone. Now let's talk about magnetic field. See, you must have seen, let's say this is your magnet, okay? Let me draw it like this. So this is your, let's say, North Pole, and this is your South Pole. See, what happens is, let's say when you take any magnetic substance, take a pin here, okay? If you take a pin here, then this pin would move here and there as you move you know, as you move this bar magnet, up, down, or near around these pins would, they would start moving. Now, why so? But if you keep this pin here, then this pin might not move, all right? Or if you place it here, this pin also might not move, because the distance between these pins and this magnet is a little bit more compared to these pins, all right? So we have seen that magnetic force acts from a distance, right? Magnetic force acts from a distance. But obviously, there has to be some limitations to this distance, right? So there must be some influence of the magnet passing through the space. And this influence reduces as we go further away from the magnet. If you put this pins like far away from the magnet, then this magnet would not be able to affect these pins. This magnet would not be able to attract these pins, right? So, what the kind of activity I just told you, by that activity you can see the magnetic field. So, we can say that the influence of the magnet becomes weaker. The influence of the magnet becomes weaker and weaker until at some distance away it's not felt at all. Like if you take this pin here, it will be felt. The magnetism would be felt. If you take this pin and move it here, it might not be as effective. But if you take it here and keep it here so far away from the magnet, then there would be no effect at all. All right. So as you take the object far away from the magnet, the effect of the magnetism would become weaker and weaker. So we can say that there is a region. Let me write it down for you. All right. So we can say that there is a region around the magnet where its magnetic influence, can be felt. All right. And this region is called the magnetic field of the magnet. All right. So this region is called magnetic field of the magnet. So this is about magnetic field. All right. So हम क्या बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड की. कोई भी मैग्नेट किसी भी मैग्नेटिक सब्सटेंस को कुछ हद तक, कुछ लिमिटेशंस तक उसको अट्रैक्ट कर सकता है या उसके ऊपर इन्फ्लुएंस कर सकता है. अगर वो जो ऑब्जेक्ट है वो मैग्नेट से काफी दूर है, तो वो जो मैग्नेट है वो इस ऑब्जेक्ट पर, जो कि बहुत दूर है मैग्नेट से, उसके ऊपर अफेक्ट नहीं कर सकेगा. मतलब इसका इन्फ्लुएंस कम होता जाएगा जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा. तो इसका मतलब है कि मैग्नेट जो है वो कुछ रीजन तक ही इन्फ्लुएंस कर सकता है चीजों को, राइट? सो बेसिकली ये जो रीजन है जहां तक मैग्नेट की इफेक्ट होती है, उस रीजन को मैग्नेटिक फील्ड कहा जाता है. अगर आप देखो तो आपको बोला जाता है कि आपके कंप्यूटर के पास मैग्नेट नहीं होना चाहिए, बिकॉज वो अफेक्ट करता है आपके कंप्यूटर को, स्क्रीन को, इनफैक्ट पूरे कंप्यूटर को, राइट? इसीलिए कंप्यूटर के आसपास आपको मैग्नेट नहीं रखना चाहिए, राइट? वरना वो इन्फ्लुएंस करके उसको शायद बिगाड़ भी सकता है.
सो इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड होता है। अब हम बात करते हैं यूजेस ऑफ मैग्नेटिज्म और यूजेस ऑफ मैग्नेट्स रादर। से हमने काफ़ी सारी चीज़ें देखी थी कि कौन सी चीज़ों में मैग्नेट यूज़ होता है। When I started this chapter, I showed you some pictures of refrigerator, compass box, you know. So इन सारी चीज़ों में magnets use होते हैं. But we have already seen all these things, right? We also know the compass for finding out directions. We use magnets in that also. Now, besides these magnets, find a large number of applications. There are so many things in which magnets are used. The first thing I told you, that refrigerator, all right, let me just write it down. Okay, so the first thing was refrigerator. Refrigerator door stickers rather. Okay, so refrigerator door stickers, then closing mechanism में भी होता है magnet, right? तो वो एक चीज़ है. कभी कभी बुलेटिन बोर्ड्स में होता है, फिर टॉयज में होता है, right? Then we can see magnetic effect in electric motors. इलेक्ट्रिक मोटर्स जो होती है उसमें भी होता है, यूज्ड इन फैंस, जिस वजह से फैन मूव करता है, तो उस वजह से भी वहाँ पे भी हम मैग्नेट्स यूज करते हैं. देन बाइसिकल, then automobile parts. Okay, in some parts of the automobile also we use magnets. Then we can say that in speakers, microphones, okay, in microphones, speakers, in some tubes of in some parts of televisions also, parts of TV also, or computer monitor. Okay, कंप्यूटर की मॉनिटर में भी मैग्नेट यूज होता है. Then in some audio and video tapes, alright. कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में भी होता है, जो कि हमने यहाँ पे पिक्चर लिया है, कंप्यूटर हार्ड डिस्क, ओके, टू स्टोर इंफॉर्मेशन ऑफ कोर्स. सो ये सारी चीज़ों में मैग्नेट यूज होता है. फिर दूसरी एक चीज़ है जिसमें मैग्नेट यूज होता है, वो है आपका ये क्रेडिट कार्ड, right? See, in credit cards and ATM cards where the information is stored in a magnetic strip, आपको पीछे magnetic strip दिखाई देगी. आप नोटिस करोगे जब there are some cards, if you enter it into the ATM machine, it'll just get stick. Why so? Because it has magnetic chip, alright? वो एक magnetic strip होती है जिसकी वजह से कार्ड अंदर चला जाता है easily. Right? Sometime picking up pieces from waste, क्या होता है कि बहुत बड़ा garbage होता है, sometime field होता है, trash field. अभी उसमें there are so many iron pieces in that trash or in that garbage. Now it becomes very difficult to find out all these things. So what do? They take a vehicle, and then in that they have this magnet. It's a huge magnet, of course, and then they just move it above, just little bit above that garbage, so that magnetic field, जहां तक उसका magnetic field जाता है वहां तक वो उसको नीचे करते हैं. ठीक है, फिर वो जो garbage में जो भी मैग्नेटिक सब्सटेंस हैं वो सारे उस मैग्नेट को स्टिक कर लेते हैं, एंड देन दे रिमूव इट फ्रॉम दैट गार्बेज. दिस इज हाउ फॉर पिकिंग अप आयरन पीसेस फ्रॉम वेस्ट ऑल्सो वी कैन यूज मैग्नेट. So with this topic of the uses of magnets, we are ending this lesson. I hope this is useful to you and you people have understood it properly. If you have any doubts or if you have any queries regarding the same, you can definitely ask me in this comment section also, all right, so that we can clear your doubts. So till then, goodbye.